जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ डॉक्टर कुरियास टेक। आज की जो हमारी गेस्ट हैं किसी तारों की मोहताज नहीं है। आप लोग उनको देख रहे हैं रिसेंटली ड्रामा बदनसीब में। आई होप कि नाम का असर उनके ऊपर फिलहाल ना आए। खुश खुश है, बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट है, वेरी वेरी टैलेंटेड, वेरी वेरी स्वीट। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दानिया। दानिया अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? Walaikum Assalam, Dr. Anila. I'm very, very excited and happy that I'm having this session with you. बहुत Thank you for having me here. बहुत स्वीटली मुझे जवाब दिया मैंने जब आपको इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया था। इट वाज वन ऑफ द स्वीटेस्ट मैसेजेस दैट आई एवर रिसीव्ड। वरना मुझे काफी गंदे गंदे मैसेजेस भी मिलते हैं और बहुत सारे नहीं भी मिलते कि मैं बार बार अपने हर शो में कहती हूँ। बट एनीवे नहीं, उससे मुझे आइडिया हो जाता है कि लाइक मैं किसका कर सकती हूँ और किसका नहीं कर सकती हूँ। बट आई मीन द वे यू कॉन्टेक्टेड एंड कनेक्टेड विद मी, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। थॉरो जेंटलमैन तो नहीं कहना चाहिए, क्या कहते हैं यार? थोड़ा जेंटलमैन का ऑपोजिट क्या होता है? लेडी लाइक? You're right. What do we say? It's a very being a super lady like. Yeah, could be. Yeah, whatever. We are good with everything and anything. Yeah. दानिया, वेलकम टू द शो। सबसे पहले मुझे ये बताओ, शुरू करने से पहले मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ी सी। आपका जो नाम है दानिया अनवर, राइट? यूजुअली पीपल यूज अनवर का जो सरनेम होता है वो ए से शुरू होता है, आपका ई से शुरू होता है, तो इसके पीछे क्या कहानी है? Well, I think in the Turkish language they use this spelling. Dusra, a lot of people confuse Anwar and Anwar. I've been called Anwar, Dania Enwer so many times. And my daddy uses ENWER on his social media. That's what his official social accounts say. So yeah, Daddy Cool ki beti ne wohi naam rakh liya hai. So yeah, that's official spelling of my name, by the way. Yeah. ओके, परफेक्ट। तो दानिया, आई वाज, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम ज्यादातर कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, मगर अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम ट्विस्ट लेकर आते हैं। आई वुड लाइक टू नो लिटिल बिट अबाउट यू फर्स्ट। लाइक हाउ डिड यू कम इनटू दिस प्रोफेशन? कैसे कैसे आई हो? क्या हुआ? टेल मी लिटिल I बिट। think this is something, I'll give you a little feedback about how I was brought up. I was brought up in a home jahan par arts was a huge part of our life. So mere dada, he was a dentist. My father was in the pharmaceuticals. My puppo was a professor of French. My dadi was a homemaker and my mom was a homemaker. But the weekends at my grandparents was basically like like an art project show के हर जगह एक छोटे छोटे सेंटर्स बने हुए होते थे। मेरी फुप्पो जो कि एक फ्रेंच प्रोफेसर है वो फैब्रिक पेंटिंग कर रही होती थी। शी लव ड्रॉइंग बर्ड्स विद ऑन फैब्रिक पेंट्स। मेरे जो अब्बू और मेरे दादा हैं तो वो जो डेंटिस्ट्री में जिस चीज से मसूड़े बनते हैं, द पिंक थिंग, वो उस चीज से क्राफ्ट कर रहे होते थे, छोटी छोटी चीजें। My father would also do thread work. मेरी दादी ने मुझे पहली दफा स्केचिंग, जो पहला एक रोज प्रॉपर स्केच करना सिखाया, वो मेरी दादी ने सिखाया था। Then my mother, she really wanted me to be good at singing, तो वो मुझे बचपन से गाना सिखाने की कोशिश करती थी। और फल्ला इतना मुश्किल काम है गाने पे रियाज करना, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझसे नहीं हो पाया। तो so that is how I was. और मतलब ये जो one of these very prominent memories in my life is where all of us, my dadi, abbu, popo, ammi, we were all having this little project of making a Humpty Dumpty with an empty egg shell और उसकी leather pants proper पहनाई उसको, उसका leather का hat। तो अब्बू और दादा जो हैं उसके, because उसने हाथ में एक पाइप पकड़ा होना था, तो जो छोटे से हाथ उसके थे वो उसका वो जो मसूड़े वाला था उससे उन्होंने स्कल्प्ट किया था, tiny hands. So it was like सोचे एक एग जितना, और उसके हमने जूतों की जगह वो रेड बीन्स लगाए थे। So this is the house that I was brought up in. Arts was all around me. It was very much promoted. हालांकि दादा मेडिकल फील्ड में, अबू मेडिकल फील्ड में, but there was always this inclination towards arts. And there was a lot of encouragement. Like मेरी दादी ने मुझे shadow work सिखाया था, वो जो मुल्तानी काम होता है। Was very young and I was all into it, like hands on में activities में होती थी। तो I remember मैंने अपनी दादी का एक दुपट्टा था, उसके साइड पे उन्होंने खुद ही ड्रॉ किए थे 4 अलग अलग तरह के पत्ते, और उन्होंने मुझे कहा कि एक को तुम ग्रीन, एक को ऑटम कलर, और इस तरह करके उन्होंने मुझे धागे भी दिया और उन्होंने मुझसे शैडो वर्क कराया।
But I was probably 9 or 10 at that time when I did it. And she wore that dupatta and she used to flaunt it that my granddaughter did it. So I think there was so much encouragement also from my elders that somehow or the other, na chahte hue bhi, arts was very much into my family. And then my mother, she wanted me to become a singing rock star. इसीलिए वो जो मैं आपको रियाज की बात करा रही हूँ, मतलब 4 साल की बच्ची है, वो नूरजहां का गाना अभी ढूंढ ही रही थी, तुम्हें ये नजर हमारी। एक तो वो बच्चे के लिए इतना मुश्किल, और फिर जो साथ में रियाज करना, बहुत कोशिश की, पर आई टेल यू डॉक्टर अनीला, जितने सिंगर्स हैं, आई सल्यूट देम बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब टू प्रैक्टिस सिंगिंग एवरी डे रिलीजियसली. सो वो करने की कोशिश की, but then I was like, Mama, I can sing, मगर I'm not confident about it. So anyway, long story short, I was very much into thinking of, I don't know, I think अगर मुझे थोड़ा सा उल्टा काम है, जैसे लोग कहते हैं ना, हाँ गाना बजाना अपनी जगह, पहले तुम डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओ. मेरे घर में ये था कि उन्होंने कहा देखो सबने सब आर्टिस्ट है, मतलब किसी ने परसू नहीं किया. So, you have so much in you, take on with this art, take on with this art. So that is how it started. And then I was given a chance. There was a call from, one of these music channels, shuru mein, jab I was very young, I was doing my O-levels. And I got a call for VJing, and my mother said no. And I was like, what? Wait, you always said that this is what I'm going to do, and now I have this chance, and why won't you let me? And then she said, I want you to, but at a mature age, and when you've completed your studies and everything. And we had a little fight, हर एक के घर में ऐसे माँ बेटियों की लड़ाई होती है. मैं नाराज हो गई, रुस गई बिल्कुल. I was like, what is this, I mean, वो तो होता रहेगा, और हमारी country में तो once you're in the mature age, you're out, you're retired. How many, mature women work in our industry? Especially उस जमाने में तो बहुत ही उस तरह से था. So then वो हमारी लड़ाई रही जो भी, और ये वो. Anyway, then I got into education basically. I started teaching kids, and I'm very good at teaching early years kids. That is what I was doing. But sadly in our country, teaching is a little bit of a thankless job, to be honest. The more I wanted to give, and I was not encouraged. It was always something or the other. And I could see it was not in the favor of the kids. It was just a certain system. So I was not happy about what I was doing. And this one day I was teaching in a very, big name of a school in Islamabad. And then, one day I just broke. I was like, no, Mom, you know what? I'm going to just quit. Because if I don't, I'm going to break. And I know a lot of my friends also telling me, are you crazy? You have a great job and this and that. Find something else and then quit. But that's how I am. I'm very impulsive. I'm like, hey, listen, if I don't stop right now, if I don't take this break, I'm going to break myself. And I can't do that to myself. I'm not going to break. So I'm just going to quit. So I quit. I was coming to a shaadi in Karachi and to my friend's wedding, which was supposed to be a weekend thing, but I quit, and I'm like, I'm making a 15-day thing. And while in one of these days when I was actually just before quitting, a week before that, I was, I came from work and I was sitting, and my mother, she just looked at me. You're eating and she's finished her food, but from the corner of your eye, you can see your mom's looking at you. तो होता भी पता नहीं क्या गलती होगी, मामा क्या देख रही हैं, And then I just look at her and she goes like, Dania, तुम्हें पता है ना तुम्हारे अंदर माधुरी वाली कशिश है, तुम अपने टैलेंट को क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही हो? Is that yes, for sure, I agree. Okay, sorry, carry on please. So that was like another wo jo ek tha. By this time I was mature. I actually started working at the age of 27, 28. That was pretty late for somebody to start acting in our industry. But that's how I started. That's how I came in. And it's also interesting that internationally, हमेशा चाहे आप बॉलीवुड की साइड पर देखो या हॉलीवुड की साइड पर देखो, if you go to a film school or an acting school, and if not, then you always start from, behind the camera somewhere. You learn things, and then is when you come into acting. चाहे वो सोनम कपूर हो जिसका बाप अनिल कपूर है, but she also first works on the set, in the production, learns, and then is when she comes. So I came to Karachi and I thought I'm gonna do that too.
the same way. So I started going to the production house and everybody said, oh, after the Dania of acting, can you get I was like, yeah, I will do that, but I really want to start from production. So khair, एक production में मैं गई on first day. उन्होंने कहा ये एक छोटा सा रोल है, ये कर लो. मैं वहां से भाग गई. कर भी लिया मैंने, मुझे याद भी नहीं उसका नाम. It was like a little guest appearance in something. And then I was like, nope, I'm not doing this. Then I finally, through a friend, जब मैंने give up कर दिया, मैंने कहा चलो यहाँ पर तो नहीं होता, एक्टिंग में ही जाना पड़ेगा, नहीं काम मिल रहा प्रोडक्शन में. So I met with Syed Ali Raza Osama, who was my friend's teacher also, former teacher. So he said, yaar, tum unse mil lo. He probably has some project and he'll give you an acting job. So I go there, I meet with him, but gladly he was an educated person because hamari industry mein har tarah ke log hote hain. So gladly the first person that I came across was Osama. He was a very well-educated person who was also a teacher at a certain university. So, he knew his deal. So it was very okay and very easy for me to tell him that, listen, I came for production and that's how I wanted to get into acting, but it's not really working out for me. So yeah, you have any role for me? So वो कहते हैं luck किस तरह की होती है. कुछ तो उनकी 6 दिन की प्रोडक्शन हुई थी और उनके प्रोडक्शन हेड का कुछ प्रॉब्लम आ गया था, कुछ डेट्स का मसला हो रहा था. So they were having some issues. So he's like, hey, listen, we have a production head की vacancy. Would you like to take up? I was like, Osama, but I've never even been on a set in my life. How are you going to do that? He's like, तुमने 15 minutes में मुझे अपना सब कुछ बता दिया and what you want to do. And so you were so good in explaining that. So, you're good with communication, so you could do it. So just get on. I was like, a head of production? Like not even anything else? So, well, I got in and I said, मैं 2 हफ्ते तो बहुत सवाल करूंगी, किसी ने मुझे डांटना नहीं. So that's how I started my first gig as a production head, and that was a drama called Dil-e-Ishq, which ran on Geo channel. There was Ijaz Aslam, there was Kamran Jilani, there was Neela Munir, and there was Aisha Khan in that. And so that was my first production, and that's how I did it. Then I did another one. And then I finally, with people that I knew, and now I knew, I slid into acting. When was that? Which year? I think that was the year 2017 or 2016 end, something like that. 2016, I think the dramas that I saw of you were, I think the earliest one was Dhaani, they were like 2016 I think it was 2016. I'm very bad. First play kya tha? Okay, so this is also a very interesting story. So the first play, now I'll give somebody who's very, few people are very important in your life. And now वो आपके चाचे के बेटे होते हैं, ना मामे के बेटे होते हैं, but they're just helpful souls. So I'll tell you, Yasra Rizvi. So yeah, one of the second productions that I was doing, and Yasra Rizvi was there. And so I was in touch with her and she said, okay, I'm going to get you a gig now. I was like, great. So one day I'm at a production thing and Yasra calls me and she's like, hey, you know what? There's this gig and you've got to go meet Marina Khan. And at that time, Marina Khan was working for A&B. That was for Geo Channel. I was like, right now, but I'm in the middle of something. She's like, I don't care. Just get a blow dry. Make sure you look good and just go meet Marina. I was like, okay. So that's where I go. I met with her and Marina said that, you know what? I have this practice play for you. I promise to give you a good role, but jab aap pehla acha role karte, and by the way, there was basically through a director, through Yasra Rizvi, I was given the opportunity of a lead in some play. And so that is what I was called for. And then Marina ne mujhe bataya ki dekho, when you're a new person and you're doing the lead right away, तो आपके ऊपर ना बहुत सारी नजरें होती हैं और लोग छोटी-छोटी mistakes का उस वक्त देख रहे होते हैं. So I, as somebody that you've come to, I would suggest कि तुम कोई 1-2 practice plays पहले करो and then come as a lead. Heard her, but you see, जब आपके सामने एक इतनी बड़ी opportunity होती है कि आप एक ड्रामे में हीरोइन आएंगे और अगला कह रहे हैं कि नहीं यार ये नहीं करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये बहुत जरूरी है. So it's kind of a little difficult decision. So what I did was, I said, okay, let me get back to you about it. I went home all night. I thought about it. I discussed it with my mom also and a few friends also. And then, it was like somebody senior has told you something and baat to sahi keh rahi hai. Light lena, dialogue kis tarah bolna. Although मैंने बहुत कुछ production करते हुए सीखा, but still I was not there. So
So anyway, I just called her the other day. I was like, yeah, Marina, I'm going to go not with this project, but a practice play, like you said. And Marina did not waste a day. Another day, she calls me. I just wake up from a call at 10 a.m. in the morning. And she's like, hey, listen, just get on set. Whatever you have. I'm like, but I don't have clothes. She's like, whatever you have, bring everything and just get on set. So that was a very small play called Heer. Ramesh Rizvi उसके director थे जो अभी अब बड़े बड़े माशाल्लाह ड्रामे बना रहे हैं. झूठी भी जो इकरा अजीज का था was by Ramesh Rizvi. So he was the director. और मदीहा इमाम मेरे साथ थी जिसमें हीर बनी थी. And I think it was a great cast. Madiha is a lovely co-actor. That was my first practice play that happened. And after that, shortly after that, Ali Faizan Anchan ka Yasir Rizvi ke through who I met with, that drama tha Dhaani. Usme bhi Madiha thi by chance or main thi. So that's how Dhaani was like my first project that got, you know, a lot of viewership and got recognized, and Shaani became a name that people knew. Constantly, धानी जहाँ होती है शानी वहीं होती है. Yeah. Like I think hardly कोई एक आध सीन ही बेचारे हीरो को मिले हो कि धानी के साथ. Otherwise, I was always समी का रोल बहुत कम है उसके हीरोइन के साथ. लेकिन ये कि आपका जिधर जिधर जहां जहां पे ये आती है मदीहा वहां पे मुझे पता होता है कि यू नो शानी इज समवेयर बिहाइंड. लाइक मैं पीछे से देख रही होती हूँ अभी दुपट्टा आएगा और अभी जो है वो दौड़ती हुई आएंगी. सो कैसा लगा ये पूरा एक्सपीरियंस? कैसा था? मजा आया? मुझे तो लगा कि बहुत मजा आया बिकॉज योर केमिस्ट्री वाज ऑसम विद मदीहा. Yes, and particularly talking about Dhaani, so हीर में ऐसा था कि हीर में मदिहा का रोल ऐसा था कि वो हमारे घर में गांव की लड़की आती है और वो मेरे भाई की पसंद होती है और मेरी बड़ी अच्छी दोस्त भी होती है, लेकिन मैं उसको उसमें छोटी बहनों की तरह ट्रीट करती हूँ. एंड आई एम 3-4 years older to Madiha myself. So and I am generally अपने खानदान में भी I am the दीदी ना. मैं सबसे बड़ी हूँ अपने ननियाल में. मैं सबकी दीदी हूँ. Dania, this is too much information. Which is fine. I'm sorry. I don't want to freak everybody out. So actually looked like the younger sister. I'm sorry, but yes, you did. So I'm actually taken by surprise. Okay, please carry on. I was on set and then I told Faizan, I was like, I'm not enjoying it. I know I'm not acting like a younger sister. I know for some reason मेरे acting में एक बड़ी बहन वाला एक perception आ रहा है. और जाहिर है वो जहाँ जहाँ होता है कि हीरोइन के साथ कुछ हुआ और मुझे केयर करनी है तो मैं एक बड़ी बहन की तरह पहुंचती हूँ. तब हम वर्कशॉप कर रहे थे. You are the responsible one, like मतलब उसमें बड़ी बहन वाला नहीं, but you are the smarter one of the two. To be honest, like I'm the more nerdy one, I would say. Yeah, nerdy, mature. Like बड़ी बहन वाला एक है, लेकिन छोटी बहनों को भी like आप छोटी बहन भी बड़ी बहनों की तरह behave कर सकती हैं. Like so then that's what happened. So I took my time, of course. That's I'm very vocal. I communicate whenever I have a problem. I told Faizan is like, no, I know you're gonna get it. Just keep at it. And Madiha is also very supportive. She's like, नहीं मिलके कर लेंगे. So I was thinking all night, and then suddenly it struck to me कि मेरी छोटी बहन है. We're just two sisters. जो कि मुझे height में भी लंबी है, वो मेरी बड़ी बहन लगती है. But there is something about her that people will know she's the younger one out of the two. It's just the way that she walks. It's just that baby thing on her face. I think this is your guilt conscious there. She wasn't looking like your older sister. You are the one who are looking like the younger sister. Okay. No, but I was supposed to look like I was the younger. You were okay. Yeah, मैंने adopt किया उस चीज को. जिस तरह मेरी बहन है कि वो जैसे भी है, there are certain nuances, उसके expression होता है. Shaani was always like this. Yeah. Shaani was always this. What happened? This is Shaani. तो उसकी बड़ी बहन की छोटी बहन की हरकतें भी तो ऐसी नहीं. बड़ी बहन की हरकतें भी तो ऐसी है ना. But then that was me trying to mimic my real life younger sister. Okay. That's how she is. So
And pata hai, Dhani mein, what was a very big learning experience, because when you're playing a supporting role, which a lot of people I think do not understand, I knew that I'm a supporting role. So whatever I do has to support the main character. And no matter how I acted, I made sure that through me, the limelight was on the main lead. काफी दफा हमारे सेट्स पे इस तरह होता है कि इस तरह जब आप मेन लीड पे नहीं होते तो दूसरों को सपोर्ट करने के लिए, थोड़ा एनकरेज करने के लिए कहते हैं यार तू ना सीन खा गया तू सीन. बट यू सी व्हेन यू सी फ्रॉम द व्यूअर्स पर्सपेक्टिव, आप कहते हैं यार इतना ओवर क्यों हो रहा था, ये कैरेक्टर इतना ओवर क्यों हुआ, यहाँ पे क्यों खाने की कोशिश की इसने सीन. You see, so when you're working, you might want that encouragement, but on screen, I think a supporting role, or I think that was, I'm glad I did it. I think I did a good job for it. I was very happy with the way I did it, because I knew no matter how best I did, I made sure the limelight went towards Dhaani. And that is what a supporting actor is. That is why they are called supporting actors. They're not called supporting actors because वो extra cast होती है. Their job is to support the leading characters. So that was a good learning experience for me. और एकदम से स्टार्टिंग अपने करियर में ही हाशिम नदीम का लिखा हुआ प्ले करना, हाउ हार्ड, बिकॉज उनके इट वाज नॉट हार्ड. I tell you, एक अच्छा स्क्रीन पे अगर लिखा हो ना तो आसानी हो जाती है. जब स्क्रीन प्ले अच्छा नहीं लिखा होता तो आपको एज अ कैरेक्टर को बनाने में आप सोचते हैं आपको खुद बहुत करना पड़ता है. Even Ali Faizan, our director, वो भी कहते थे यार there is not a thing that I have to change about this script because it is so well written. And I think मेरी एक और win ये थी that when I met with Hashim Nadeem in person, वो मुझे पहचाने ही नहीं थे. And then I said, Hashim Nadeem sir, I'm Shaani from Dhaani. He was like, what? You were completely different there, because in real life, I might be wearing the most Western clothes, but there's always something very ethnic about me. I wear my jhumkas and stuff, and वो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी PTV Lahore studio में. तो वहाँ पर, of course, if you're going to PTV and everything, I just make sure, I dress up very modestly, and I'm very ethnic and Eastern. अब वो बिल्कुल एक, with my red lipstick, and I'm all this चेल चबीली जहाँ हारा बनी चली जा रही थी मैं वहाँ पर. So when I met with him, he was shocked. So I kind of, और वो खुद भी यही कह रहे थे कि wow, like, I just love the fact that you're so different in real life, and in Shaani you portrayed a completely different girl. So yeah, and Hashim sir has actually been very supportive. He's been given guidance to me after that. So अगर स्क्रिप्ट अच्छा लिखा हो, और क्योंकि आपने देखा होगा कई स्क्रिप्ट, आई डोंट नो वो स्क्रीन पे ऐसे आता है कि नहीं आता, बट कभी कभी हम कुछ स्क्रिप्ट पढ़ते हैं उसमें डायलॉग्स बड़ी मुश्किल लिखे होते हैं और बड़ी फलसफाना बातें होती हैं, वो बहुत मुश्किल होता है याद करना क्योंकि उनकी कोई सेंस बन नहीं रही होती, वो जबरदस्ती लिख दिए होते हैं. You see, when Hashim Nadeem writes, his screenplay is so apt that dialogue is automatically generating from that character and you buy it. So that's why for me it was easier. It was a lovely play. Thank you for introducing me to that play. Honestly, मुझे इतना मजा आया, मैं binge watching करती रही, and कल सुबह मैं पूरे 2 या 3 बजे तक देखा है मैंने, कल नहीं परसों सुबह, and I was like, and मैं सर चकरा रहा था कल का पूरा दिन मेरा, और साथ साथ गालियां भी दे रही थी. मैंने कहा यार पूरी रात जगा के रखा मुझे, but I had to watch it because it was so good. Honestly, like everyone did a fantabulous job. वो जो बंदा है ना, वो जो he's your cousin brother Raja. Raja. I have not seen him much. I don't know. Raja is basically a model. His name is Muhammad Ali and he's a very big model. And जब मैंने भी देखा, मैंने कि यार इन्होंने मॉडल ले लिए, मॉडल से तो एक्टिंग तो होती नहीं, but when he came on set, he was so charged up. वो अपने पूरे उसमें आया था और वो पूरा he'd say, हाँ मुझे पता है, लाहौरी लोग रे को लाम बोलते हैं तो लिबर्टी शर्ट और इस तरह से. So he also did so much work, and I was amazed that somebody who's a model, he did that, and yes, you're right, he did an amazing job. बहुत जबरदस्त काम किया. अगर if you are in touch with him, please just मेरी तरफ से उनको. Well, definitely, I will definitely tell him. His name is Muhammad Ali. अच्छा, मुझे क्योंकि I have been searching about him, but मुझे कुछ ज्यादा उसके बारे में नहीं information मिली.
So that's why I thought कि मैं जरूर mention करूंगी, and like hats off to him. I mean समीर खान obviously ठीक है, he's a lead and everything, वो तो बहुत जबरदस्त काम करते ही हैं, उसकी कोई वो नहीं है. बट एक होता है ना कि आपकी एक्सपेक्टेशन होती है और एक कैरेक्टर ऐसा निकल के आता है जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं. And he did a tremendous job, honestly. And He's not an easy character, I tell you. There was somebody else, I'm not going to name the person, but he did come on set and he tried for 3 days, I guess. But I think he was too overwhelmed to do that. Not that he didn't try his best, but he just got so overwhelmed. And then sadly, he got injured also. But, he was trying a lot. So it was not an easy character to get into. No. And so when Mohammed came and he did that, trust me, that's amazing. And I understand what you're saying about Sami, because Sami was already a great actor. So actually, तो हम सारे उसके umbrella के नीचे चले गए थे ना, कि Sami को देखेंगे तो शायद हमें भी देख ले, right? But yes, you're right. सभी का गेटअप बहुत बुरा, वो जो उसने वो किया हुआ है ना, वो बालों को डाई लगे टू बी द punk kind and everything. उसकी एज पे सूट नहीं करती ये चीजें. I don't know why they do this. I think this was 2016 or 2017. I think it was 2016. You see वहाँ पर वो जिस तरह का दिखाना था, एक Casanova kind of a thing. How do you make it? Just give him a streak. I guess that's what they were trying. बहुत बुरा लगा इसका hairstyle and everything. Like when you watch it in 2022, it's like यार ये क्या आ गया है, like they could have done something. कसम से उस जमाने में बहुत हिट हुआ था. वही बात है, आउट ऑफ फैशन हो गया. उस जमाने में तो बड़े लड़के जाके कराया था एक लट. Okay, probably थोड़ा सा देर से. Any nice experiences that you can share with us regarding that show before we move on to your other place? I think it was overall amazing because मैं लाहौर बहुत कम गई हूँ, और ये हमने क्योंकि पूरा अंदरून में शूट किया था. तो मोची गेट पे मेनली, और मोची गेट तो क्योंकि हम वहां पर आई थिंक कोई 6 महीना थे, तो वी वर लिविंग, स्लीपिंग, ईटिंग इन द ओल्ड टाउन, एंड दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. फनी एक है, बहुत ही मजे की मेमोरी है मेरे पास उसकी एक पिक्चर भी, आई विल शेयर इट विद यू. इट इज ऑन माय इंस्टाग्राम. सो अभी हम ठंड थी, जनवरी की सुबह, जो ये पुराना लाहौर है उसकी छत पे हमारा सीन था. ये हमारा 3rd डे ऑफ शूट था. 2 दिन हम शूट कर चुके थे, बहुत अच्छा हुआ. जो हमारा ओपनिंग सीन आपने देखा होगा, जो हम कमरे में लेटी हुए हैं, वो सारा वो हम शूट कर चुके थे. आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट वी शॉट. नाउ हमें तीसरे दिन छत पे जाना था, सर्दियां जनवरी की, एंड आई थिंक द टेम्परेचर फील्स लाइक वाज -1 एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. जो ड्यू थी वो भी जमनी शुरू हो गई थी. एंड इट्स 8 o'clock in the morning. It's me and Madiha and the entire crew. The first time director says, एक take और होगा, दूसरी दफा भी होगा. And me and Madiha are kind of confused कि यार इतने takes हमने पहले कभी नहीं दिए 2 दिन में, आज ऐसा क्या है? We're doing the same thing. What's wrong? After the 5th, 6th take, the director also just kind of, got frustrated. He's like, what is wrong with you girls? Why are you this overacting? And we're like, no, we're not overacting. We're acting like we just act. So we're like, okay, I'm sorry, let's try. So we try again. He's like, no, you're still overacting. We try the 3rd time. He's like, no, you guys are still overacting. So मेरा हमेशा ये कि मुझे अपनी गलती जब तक मैं देखूं नहीं, क्योंकि अपनी तरफ से तो हम परफॉर्म बेस्ट कर रहे हैं, बट जब आप उसका आउटपुट देखते हैं तो आपको पता लगता है दूसरे की नजर से कि गलत क्या. So like, Fazan, can I please see and you exactly show me what we're doing wrong? He's like, आओ replay करो भाई. And I actually see it. And I'm like, I'm doing the entire scene like this, like, Dhani, तुम कहाँ हो? यहाँ होगी. तीनों हम उस सीन में खा रहे थे. ये लो, तुम भी हो. Like, what is happening? Then we realized कि सर्दी की वजह से मुंह नम हो गया था, तो जब हम हंसते थे तो हमें लगता ही नहीं था कि हम हंस रहे. जब तक यहाँ तक हंसी पहुंची थी हमें लगता था हम हंस रहे हैं हल्का सा. और नेट के कपड़े, सो हमने फिर वो सीन इस तरह से किए था. वो पिक्चर शेयर विद यू कि हमारी जो चारपाई थी, हमने उसके नीचे कोयले जलवा लिए थे. हमने कहा हम इस पे बैठ के करेंगे. नीचे ये लाइक हमारा बारबेक्यू हो रहा था. दैट्स हाउ वी डिड द सीन. मुश्किल काम है. बारबेक्यू भी याद आया. मैं तो एंड तक सोचती रही कि बाबरा शरीफ की कढ़ाई आखिर बनेगी कि नहीं बनेगी. I love the मुर्गियों का जो पूरा उसमें हाशिम सर ने डाला हुआ. It's beautiful and I swear real life में ऐसे होते हैं. आंटियां पता नहीं क्यों नीली, चांदनी ऐसे नाम रखती हैं मुर्गियों के. I think that's the reason why I think I fell in love with this drama, because like इसके अंदर इतना एक वो traditional touch
इन्होंने दिया पूरा बसंत एंड लाइक वो पूरा लाहौर का एक, बिकॉज आई हैव नेवर बीन टू लाहौर, इज वन ऑफ माय विशेस कि मैं कभी लाहौर जाऊं, कभी इत्तेफाक हुआ नहीं है मुझे, तो इसका ये मतलब नहीं मैं पैदा नहीं हुई हूँ पैदा हो चुकी हूँ नहीं लाहौर कभी नहीं आई तो बहरहाल बट लाइक आई जस्ट लव्ड इट कि वो इन्होंने, मेरी सिर्फ ये थी कि थोड़ा सा ज्यादा लाहौर को दिखाना भी चाहिए था, लाइक वो जो 2-3 टिपिकल शॉट्स थे वो मीनारे पाकिस्तान के दिखा दिए, और लाइक वो दूध दही वाला निकालने का वो दिखा दिया, वो 2-3 शॉट्स दिखा दिए. इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस. आई मीन व्हेन यू आर डूइंग प्रोडक्शंस लाइक दीज जो कि इंटरनेशनली भी देखी जाती हैं, बाहर भी देखी जाती हैं, तो आप थोड़ा सा और एफर्ट करके लाइक थोड़ी सी ब्यूटीफाई ट्राई हिज बेस्ट. पता है चैनल वाले जितना आपको बजट देते हैं उसमें आई स्वेयर हमने बीच में हड़ताल भी की थी कि हमें फाइनेंसेस दिए जाए. आई स्वेयर वी डिड दैट. हाँ, आई कैन इमेजिन. खैर ये मेरा ख्याल है हमने काफी सारी बातें आज दानी के बारे में कर ली. A big shout out to everybody associated with the team. Madiha, oh my god, I love that girl. I just love yes. वो इसका इश्क जलेबी मैंने देखा, I completely fell in love with it. मैं यार बस she's too good. She's too I'm good. just definitely getting you in touch with her. You should definitely interview her. She is a fun energy. Yeah, she is too good. मेरे लिए वो बहुत बड़ा दिन होगा अगर मैं मदीहा इमाम को कर सकूंगी, because don't worry. One of my favorites and everybody knows it. Like मैं I'm साइमा से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती, साइमा अकरम चौधरी who wrote इश्क जलेबी. बहुत दफा मैं उसको ये कह चुकी हूँ, मैंने कहा तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट जो था ना इस लड़की ने उठा लिया था. लाइक पूरा जो लाइक एक होता है कि आपका पूरा प्रोजेक्ट आप किसी को बहुत सेफली आप किसी को कहते हैं कि यार इसको कास्ट कर लो तो ड्रामा तुम्हारा कहीं से कहीं पहुंच जाएगा. बट शी डिड अ वंडरफुल जॉब एंड व्हाट अ लवली गर्ल, व्हाट अ लवली गर्ल. And very professional, I tell you. Behind the set, she's very professional also. I can imagine. अच्छा, फालतू लड़की यार, such a huge ensemble cast. Wasn't it for you? Like starting from like क्या कौन के नाम लूं मैं, हिना दिल पजीर, सलमान शाहिद, Samia Mumtaz, you name it. And that cast was Yusra Rizvi. Yes. In fact, and yes. कौन थे, नादिया अफगान, एंड एक पूरी खौफनाक तरीन कास्ट के बीच में एक मासूम सी बच्ची को फेंक दिया गया. How do you cope with that? I think I would say that Fussy, who basically approached me, that he really wanted to do this with me. He wanted a newer face because this was a girl who came from India to Pakistan and he did not want a known face. And he had spotted me in here, the first practice play that I was doing. And so that's how that started. And he got me really involved in the script while he was writing it. He got me very involved. He told me how what is this character feeling? What is this character thinking? And then when it was, given over to Mazhar Moin, the director, I think he is another level of teacher. And I think, I gave a lot of my acting credit to Mazhar Moin. He actually told me जिस तरह वो I think एक dance teacher आपको मुद्राएं सिखाते हैं. That's how he became my acting teacher. And he'd tell me exactly how, I किस टाइम पे किस डायलॉग पे मुझे 2 सेकंड में ऊपर देखना चाहिए या 10 सेकंड में ऊपर देखना चाहिए या 4 सेकंड में ऊपर देखना चाहिए. You're like 1, 2, 3 or 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's how he taught me. Wow. And because Jahan Ara ka character, she was this Lucknowi girl who came from India, had to keep that very Indian thing in her. So he was both of the teachers, Fussy and Mazhar, and on set, to trust me, it was Mazhar who was really taking me on. And I think Mazhar ke saath jitne bhi khaufnaak aur khatarnaak kisam ke actors on, he knows how to tackle them. So that's how we were all tackled the same way, trust me. जबरदस्त काम किया यार. I mean, it didn't even strike me for a minute कि कोई बहुत ही मंजी हुई एक्ट्रेस नहीं है. And like I could see at that time that you were very new and like it was a brand new face and everything. That was my first lead. That was my first ever lead, by the way.
और इतना जबरदस्त काम उसके अंदर, इतनी इनोसेंस एंड लाइक यू नो इतना लाइक दिल चाह रहा होता था कि उसको प्रोटेक्ट, मेरे अंदर की जो ममता थी ना वो निकल निकल के आ रही थी, स्पेशली यू नो द लास्ट कपल ऑफ सीन्स, लास्ट कपल ऑफ एपिसोड्स की जो सीन्स थे व्हेन यू नो शी हैज इट रियलाइजेशन कि जी वो मामू उसको बेच रहे हैं, और वो पूरा जो उसका वो पूरा सिनेरियो ब्यूटीफुली पोर्ट्रेड यार. I would say that's again a beautiful screenplay. So I think I've been lucky that I've come across good screenplays. First was Hashim Nadeem, then came Fasi Bari. And I think I'm lucky to start my work with these great names. हाँ, नहीं बहुत जबरदस्त उसमें, और मैं वही सोच रही थी कि यार इसको तो बिल्कुल बच्ची को फेंक दिया है लिटरली बड़े बड़े जायंट्स के साथ, तो इसने कैसे कोप किया होगा, बिकॉज कुछ भी all these giants are gigantic teachers themselves. Samia Mumtaz was a constant support on set for me. Weirdly, I don't know why I had a lot of time with Samia Mumtaz, but she was a great teacher to me. She taught me a lot. Everybody, be it Hina, be it Behrouz Sabzwari, be it I think who else was I majorly working with? These were the Hina Dilfazir, Salman Shahid, and Samia Mumtaz were majorly who I was working with. So all these three were like amazing for me. Funnily, Imran Ashraf was also in this. Yeah, Imran was the only character जिसको मुझे लगा कि यार इसको एक्टिंग क्यों नहीं कर रहा है, ये कितना बुरा लग रहा है, लेकिन मतलब कैरेक्टर ही ऐसा था, उसको बुरा लगना चाहिए था ऑडियंस को. I think he did a great job. क्या कर रहा है वो? अच्छा, you know the part that I really couldn't बर्दाश्त तो पाए, you know, if you pardon my slang language, was that वो हवेली वाला part जो था ना यार, वो आते थे वो जो यशरा और सीमी राहील एंड दैट गाय, यार वो आते थे, मैं उसको फॉरवर्ड कर रही थी टू बी ऑनेस्ट, बट आई जस्ट कुडंट and I'm just being very honest on camera here. We are not supposed to be, but I'm not a typical journalist, so I would not, you know, mince words. But like वो बिल्कुल मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो too much even for my standards. थोड़ा सा metaphorically भी उन्होंने उसको शूट किया हुआ है. It is exaggerated. I understand what you're saying. It's not an easy watch. Yeah. Especially जो बिल्कुल end का scene है. It is actually overwhelmingly disturbing. काफी चीजें हैं उसमें जो काफी disturbing है. Yes, but that's Fasi. When Fasi writes, that's what he writes. What brilliant dialogues! बहुत प्यारे dialogues लिखे हुए हैं. Unlike Dhaani, this was a little difficult for me. Script याद करना जहाँ आ रहा का, क्योंकि वो कम बोलती थी और जब बोलती थी तो बहुत लंबा लंबा बोलती थी. हाँ, और वो जो डार्क ह्यूमर था, अच्छा उसका मैंने देखा कि बड़ा जहाँ आ रहा, इनिशियली she was what she was, but at the same time एक बड़ा subdued दिखाने की कोशिश की, but like at times वो निकल के आ रही थी what she was actually, like you know, especially जब वो अपने उसका नाम क्या है यार मुझे नहीं पता, वो जो आपका लीड फाइनली जिसके साथ like you know that's Farhan Malhi. Okay, फरहान, तो उसके साथ जो आपके सीन्स है उसके अंदर लाइक यू नो उसके अंदर एक्चुअल जहां आ रहा निकल के आ रही थी, वो इज अ वेरी फन लविंग, बड़ी एक यू नो जवाब देने वाली लड़की है, और मैं चाहती थी वो ज्यादा निकल के आती, लाइक यू नो कंपेयर टू दैट सबड्यूड काइंड ऑफ जी हाँ जहां डालना है डाल दो, जहां फेंकना है फेंक दो. उसके अंदर जो स्पार्क था ना, उसको मेरा ख्याल है ज्यादा पोटेंशियल उसके अंदर था, उसके अंदर वो निकालना ज्यादा जरूरी था, ज्यादा मजा आता देख के. But I loved the ending, you know, how Fasi made her take a stand, कि वो यहाँ रुक नहीं गई शादी वादी करके. She went back to India. She's like, I'll come back, but I'm going to go back, get my nationality sorted. So I really liked that the end was so strong for this girl. और सारे कैरेक्टर्स बड़े स्ट्रॉन्ग थे और बहुत ही एटिपिकल, बड़ा डार्क ह्यूमर इन्होंने इसके अंदर यूज किया. काफी लोगों ने ये कहा भी कि हाय तुमने ऐसे नाम का ड्रामा क्यों कर लिया, और you know फालतू लड़की के नाम से है. People didn't really understood was the fact कि उसके अंदर हर लड़की को फालतू दिखाया हुआ है. You know, एक वो औरत जो एक बीवी है, वो जिसकी सौतन भी है, वो जिसकी शादी हुई नहीं है, वो जिसकी शादी हो गई है. So that's what it was actually, you know, only if people understood that better. Such a realistic portrayal of characters and proper तरीके से जो एक सोसाइटी का वाकई ये फंसी कर सकते हैं. I think nobody else can actually do this. ये अभी he always makes uncomfortable viewers को. That's the way he writes.
सही सही. हाँ, ये तो है, there is no doubt about it, but like he does it in a brilliant way. ऐसे तरीके Yeah. से करते हैं कि like you know आप अनकंफर्टेबल होते हैं, मगर ये कि एट द सेम टाइम यू आर एक्चुअली एंजॉयिंग, यू आर ग्लूड टू इट. Exactly. बिल्कुल. It's his forte. I don't think everyone can do that. नहीं, और ये सबकी देखने की चीज होती भी नहीं है. आई थिंक जो इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वही इंजॉय भी कर सकते हैं. जैसे अभी इनकी घिसी पिटी मोहब्बत रिसेंटली आया था, इनका जो लास्ट प्रोजेक्ट था. आई थिंक इट वाजंट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी. Only some people could understand. Yes. And I think Ramsha did a great job, Ramsha Khan. अरे बहुत बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त काम किया उसने. बड़ा मुश्किल रोल था, मगर अब उसके लिए उसको दोबारा उसको कट डाउन करना, उस रोल में से अपने आप को निकाल के बाहर दूसरा रोल करना, वो बड़ा मुश्किल है. बिकॉज अब मुझे हर रोल के अंदर उसके अंदर की वो क्या नाम था यार उसका, घिसी पिटी मोहब्बत में, आई फॉरगॉटन अबाउट इट, बट अब मुझे हर रोल में उसी की झलक नजर आ रही होती है somehow. ऐसे होता है that one drama again will help her. इस तरह तो होता है. I think a lot of times the content that we get उसमें ये होता है kind of type casting हो रही होती है. उसमें एक्टर भी कितना ही कर सकता है उससे निकलने के लिए. So it's just one good or one different script away that you will be able to just get out of it. Very true, very true. अच्छा जी, अब हम आते हैं बदनसीब पे. Yes. Look at you, like look at you and look at Mahrukh. Look at her and look at you. मुझे 100 सालों में भी कोई मुझे बता दे कि ये वही लड़की है जो मारूख का प्ले कर रही है बदनसीब में, मैं नहीं मानूंगी. कैसे किया है ये, और ये क्यों किया है, मुझे पहले तो ये बता दो कि क्यों किया. Why did you pick up a character जो कि इतना बुजुर्ग दिखाया है? उसकी वजह ये है कि when I started doing my leads and I think acting is not everybody's cup of tea. The kind of environment that we work in and the hours you work in are crazy. Or emotionally it is very draining. Kabhi you could have a good day, but on set आपको सिर्फ रोना होता है. Kabhi you could have a bad day, but on set आपको हंसना होता है. That's what your character demands. So it's very, very straining for the nerves. But then there came a time after Faltu Ladki, I did Karam Jali and then Bechari Nadia, and all of these leads, they started making me feel unhappy about what I was doing. Because मैंने फिर scripts पढ़ने छोड़ दिए थे. सारे scripts एक जैसे थे, सारे characters एक जैसे थे. And then I was like, ठीक है, Rona 1, Rona 2, Rona 3, Rona 4. I just would say कि अच्छा यहाँ पे Rona number 1 आना है, यहाँ पे Rona number 2 आना है. There was nothing really that I was doing. I was not making an effort. I was not creating characters. That's when I even took a break of a year and a half. And then I started again, and that's exactly how I was like, listen, guys, मुझे heroine नहीं बनना. मैं actor हूँ. I need to act. So give me characters. So I did Tamanna, that went on Jio COVID में. I think that was the only production that was going on. I did that, और उसके बाद से, I just started picking stuff. What happened was, I don't know if you know of this project called Oi Moti on Express. It's basically I heard about it. Yeah. It's basically about body shaming, and every episode is a different story and a different cast. So when I saw one of these episodes being released, and I saw that the girls are wearing the bodysuit, अंदर से मोटी हैं, but वो पतली सी गला है, मुंह भी छोटा है, they're not looking the character. I was like, yes, this is the kind of work that I like doing. So I called up the producer. I was like, listen, hi, you know what? I need to do this. Unki bhi balle balle hogi, because a lot of people did not want to do that. They did not want to look fat. So I got the bodysuit and everything. The bodysuit was badly made. It's okay. The production could do as much. But then as an actor, then I created my own bodysuit. I created my own thing. I put a lot of, it was my Marlon Brando moment. I know Pakistan में रह के कितना ही कर सकते हैं, but Godfather में Marlon Brando had marbles for the droopy cheeks. So I was like, this is my Marlon Brando moment. I'm going to put the cottons and become fat. So I created that look, और मुझे उसके ऊपर industry से बहुत negative feedback मिला. They were like, what have you done? You're going to get typecasted. Nobody's going to cast you. You're not going to get serious roles. And I was like, listen, I'm happy. So I don't care, what other people do about it.
But it is through that only that Mahesh Vaswani, who's the CEO of the MD Productions for Hum TV, he got that, and he was the one who forced that he needed me for this particular character, because this girl starts at the age of 25 and goes till the age of 45, 50. And initially they thought that they're going to have two different ladies playing it. The younger version would be played by somebody else and the older version would be played by somebody else. But then Mahesh said, cast this girl, and I know that she could pull it off. And then he called me over and he said, listen, I saw you, Moti. I knew what you did there. So just go do the script and do your thing. Literally, he just left it on me. And so, yes, I even gained 5 kgs to play the older Mahrukh. And they gave me that time. They were good with that. So I played the younger Mahrukh, then I played the maturer Mahrukh. And while playing the maturer Mahrukh, I roz subah parathe aur cholon ka nashta kar rahi thi, so I could start gaining weight. Maza aa raha hoga. Yeah, so I was kind of enjoying that moment. अब वेट बढ़ाना तो बढ़ ही नहीं रहा था, इतना स्लो बढ़ा. But anyway, so then I just did a little bit of makeup and everything. It was, मेरे घर वाले भी कह रहे थे, this is probably the first time where the actor is ready to look old, because my director was like, are you sure screen की prettiness खराब हो जाएगी, जो screen beauty है. But I was like, I am such a baby face, how am I going to pull off an old one if I don't do all of this? So for me, I think I really like the fact that it was a whole, a very young girl and a very old girl, and making people believe that she's older. She should not just have a streak of gray in her hair and just, those glasses. And I think the reason I could pull it off good was Faisal Manzoor, who is the content head for MD right now. He gave me a little bit of grief of, I asked him, like what's happening aage ki episodes mein kya ho raha hai, kyunki script to maine abhi aage nahi padha and I'm on shoot also. So he just said, he's like, just remember in your head that this woman, after the husband goes to jail for probably 15 years, she has worked on the shop, she's taken care of the kids and this and that. तो जितना काम किया है उसकी body में, उसके लहजे में, उसमें सब आएगा. जितना वो मेकअप शेकअप करती थी, वो सारी चीजें बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाएंगी. And I don't know if people noticed all these small things, but there were times जैसे मैंने nail polish छुट्टी रहनी शुरू कर दी थी. पहले मैं हर वक्त लगा के रखती थी and slowly wore off the character. And then, yes, I'm very happy. I happily endorsed this project and I'm very happy that I did it. And आपने देख लिया ना, notice कर लिया ना. You called me, right? That was the whole point of it. Thank you. It was beautifully. It's a beautiful role. अब मुझे नहीं पता आगे कितनी episodes हैं. अभी तो ये it's very nice. अब खत्म होने वाला है, ज़्यादा लंबा नहीं रह गया. अच्छा. I think 10 days or something. I'm actually enjoying it, यार. चलने तो क्या है? No, inshallah. I think now I'll be shortly seeing you guys soon again. I think now I'll be. Abhi I haven't been on shoot, but I think Ramsha and I are working together. Oh, okay. It's a new project coming up. Yeah, it's a new project coming up. Okay. वो भी कराची में? Yeah, that's in Karachi as well. तो कैसे manage होता है कराची लाहौर? Like, I am based in Karachi. You are based in Karachi. Achha, because the last time you told me that you were going to Lahore, I thought I was going to Lahore. I was going for a show, just for a show. I was just traveling for a day. Acha. Oh, okay. So that gave me, because you was so we stayed there. But basically, I'm based in Karachi, and most of the work happens in Karachi. Yes, exactly. इसलिए मैं जब ज्यादातर कॉन्टैक्ट मेरे होते हैं तो वो फिर यही होता है, एक्टर्स मुझे बता रहे होते हैं कि हम सिर्फ शूट के लिए कराची आते हैं and then we stay for a few days and we fly back and then we come back and that's all. इसलिए मैं जरा कंफ्यूज हो गई. तो माहरूख जो है started off as a very evil नहीं कहना चाहिए, but like very manipulative woman. Yes. ठीक है. उसके बाद फिर उसके अंदर से एक सटल चेंज आया कैरेक्टर के अंदर और अब वो अच्छी अम्मा बन गई है. तो ये कैसे हो गया? I think if you've seen the whole series as far, what I liked was कि writers ने justify की हैं चीजें. वो लड़की शुरू से evil थी नहीं. एक तो उसका brought up था. उसकी माँ ने उसको ये बताया था कि she is very
जो भी करे उसको पैसा देखना है, बंदे को फंसाना है और पैसे वाला होना चाहिए, चाहे by hook or by crook, right? And she was evil, she had evil means, तो वो एक उसकी घुट्टी में था. But genuinely Mahrukh was not that person. She just wanted to make sure that she'd find a home and be with someone. इसीलिए जब वो अपने घर भी चली जाते हैं शादी होके, so she wants to give that love. It was her mother who was, you know, kind of brainwashing her. वो तो दुआ के साथ भी वो सब होने नहीं देना चाहती. You know, she took a stand. जिसमें दुआ को कहा भी था कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे साथ कुछ होने नहीं दूंगी. So it was only her mother brainwashing her to get her out of the house. तो ये रियल लाइफ में होता है. आपके जब बैड कंपनी होती है या आपके कुछ फैमिली मेंबर्स ऐसे होते हैं जो आपको कुछ गलत नेगेटिव ब्रेन वॉशिंग करते रहते हैं, तो नो मैटर हाउ पॉजिटिव यू आर, जब कॉन्स्टेंटली वो चीज चल रही होती है ना, तो वो आपके कहीं ना कहीं किरदार में आ जाता है, ना चाहते हुए भी. क्योंकि वो आपके सामने होता है, आपको ये होता है. आई थिंक दैट्स ह्यूमन साइकोलॉजी कि यार मेरी माँ ने मुझे ये कहा है, तो अगर मैं ये नहीं करूंगी मेरी माँ तो जज करेगी मुझे. सो आई बेटर एक्ट दिस वे बिकॉज माय मदर हैज आस्क्ड मी टू डू सच अ थिंग. तो दैट वाज दैट. एंड देन आई थिंक जब वो कैरेक्टर, जो नेगेटिव कैरेक्टर आता है, जो उसके एक्स का, जो वो वापस आता है उससे मिलने, और जब उसको रियलाइज होता है कि इसकी माँ तो इतनी मैनिपुलेटिव है, इसका ये भी घर तोड़ देगी, दैट्स वेयर शी टेक्स अ स्टैंड. And then the mother, the person who's been feeding her the evil is out. That's where, you know, this girl also takes a stand for the home. And I think क्योंकि वो एकदम transition 12 years कितनी 15 years कितनी जल्दी आ गई. But उसके अंदर there was this one scene where again she says, you know, I am now going to take care of this house. I'm going to take care of these kids like they are mine, and I'm not going to listen to anything, any nonsense that anybody's going to tell me. I'm going to take my stand. But by that time the harm had been done. Like बच्चे तो ग्रो अप हो गए थे by that time. वो सारा एक मसले थे, वो तो अपनी जगह स्टार्ट हो गए. बट खैर वो ना होते तो फिर ड्रामा कहाँ चलता. ये बात है, स्टोरी में कुछ जो है वो बाप है ना, क्योंकि उसने देखें जिस बेटे के लिए किया था, बाद में वो बेटा ही निखट्टू निकला. अभी तक जो हमने देखा है कि वो चोरी चकारी में भी पड़ गया था, and he's hurt about that. बेटा बुरा नहीं है, बेटा भी मतलब ग्रे शेड्स हैं सारे कैरेक्टर्स के मैंने देखे तो. Like, I think that's what the reality of life is, and nobody is completely evil and nobody is completely good. You know, आप अपने आपको सेव करने के लिए, अपनी फैमिली को सेव करने के लिए कभी-कभी दूसरे की परसेप्शन से बड़े evil हो जाते हैं. So that's, I think that's very human of these characters that they've been written. Exactly. I think that is the beauty of the whole play as well. और जो है आई थिंक जहांज़ेब कमर के 2 प्ले आ रहे हैं, दोनों ही मेरे ख्याल में बहुत अच्छे जा रहे हैं. द मोमेंट भी, और most of his plays are doing very well. Yeah. No, I'm really after his life कि मुझे उनसे भी इंटरव्यू करना है, and I have to talk about the मोमेंट के बारे में मुझे काफी सारे रिजर्वेशंस हैं. वो फिर मैं उनसे जब बात करूंगी तो उनको बताऊंगी. एक स्पेशल एप्लीकेशन. वो बिल्कुल एग्जैक्टली. वो जब फिर जब उधेड़ने पे आती हूँ तो फिर उधेड़ भी देती हूँ थोड़ी चीजों. Please be kind. Okay, at your special request. I'm going to do that. Chale, it was such a pleasure talking to you. Any message to any of your fans that you would want to give? Yes, I tell you, मुझे इतना feedback मिल रहा है बदनसीब पे, and I think जैसे आप बोल रही थी काफी सारे एक्टर्स का कि कुछ लोग जवाब नहीं देते. I tell you, इतने मैसेजेस होते हैं that sometimes skip हो जाता है. But जिनको मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ उनका भी, जिनको मैं रिस्पॉन्ड नहीं करती हूँ उन सबको भी मैं कहूंगी, I try and go through as many messages. And what I love about all of you is there's such a huge positive feedback in my DMs. It's so respectful. I just love how respectful everybody is. So just all the love that they're giving me, I need to tell them that if it was not for that, मैं जितनी भी acting कर लूँ, you know, if they do not appreciate and acknowledge me, I don't think, you know, I'm doing the right job. So for their appreciation and their acknowledgement, it's something that's motivated me to do even better things and take even more challenging roles ahead. So I hope I keep entertaining you all. Thank you so much, Dania, for taking out so much time for us. यकीन करें मेरे पास एक पूरी 3 पेजेस के क्वेश्चंस थे जो मैं सोच रही थी कि आपके साथ बैठ के मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन द इंटरव्यू वेंट सो वेल माशाल्लाह बिकॉज ऑफ योर लवली एनर्जी. और मेरा ख्याल है इसको फिर हम इसका पार्ट 2 बना देंगे किसी और टाइम पे, दूसरा प्रोजेक्ट. तो वी विल जस्ट यू नो गेट टुगेदर. बल्कि इनफैक्ट मैं सोच रही हूँ बदनसीब खत्म होता है तो लेट्स जस्ट डू अ मीट अप देयर, एक को लेके
ये करते हैं कुछ इस तरह से, मिलके बनाते हैं कुछ इसका भी प्लान. इट वाज लवली 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 टॉकिंग टू यू. आई रियली वन ऑफ माय फेवरेट इंटरव्यूज. बहुत मजा आया. और चलें जी, Glad. अभी दानिया को अपनी मोहब्बतों में इसी तरह से याद रखिएगा. मैं इनसे जरा ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें कर लूं, जरा इधर उधर की गॉसिप कर लेती हूँ. आपकी तरफ से मेरे लिए अल्लाह हाफिज. इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और अच्छे मजेदार शो में. तब तक keep watching and please don't forget to subscribe. Allah Hafiz, take care of yourself.